हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रभाकर गुरवा। ये डायरेक्टर हैं समविति कैपिटल में एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड एज वन अमॉन्ग्स 40 अंडर 40 इन्वेस्टमेंट मैनेजर बाय एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट किए हैं बाय इन्वेस्टिंग इन हाई ग्रोथ कंपनीज जो विनर्स रह चुके हैं। सो आज हमें सर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो सर, वेलकम टू दिस सेशन एंड सर, मेरा पहला क्वेश्चन एक्चुअली ये है जो मार्केट में आज चल रहा है एंड सो एनी व्यूज कि मार्केट यहाँ से कैसा परफॉर्म कर सकता है या फॉर दैट मैटर इकोनॉमी कहाँ जा रही है। सो एनी व्यूज ऑन दैट? हाँ, मतलब अभी मार्केट्स में जिसको बोलते हैं डाइकोटॉमी बोलते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स ऑन द वन हैंड आर इन अ वेरी बैड शेप whereas the Indian markets are near all-time highs. So this is something that doesn't happen often, ज़्यादा नहीं होता है, but because of certain policy decisions which our government has taken and the robust corporate earnings that India is seeing, and the fact that कि global markets का जो index है वो बहुत tech heavy है और technology companies are not doing that well. Because of all these factors, we are seeing that while the global markets are in a bad shape, India is doing well. Although जिसको decoupling बोलते हैं, decoupling कभी मतलब बहुत टाइम नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लोबल मार्केट्स गिरते रहेंगे और हमारे मार्केट्स ऊपर जाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बट आउट परफॉर्मेंस जो है इंडियन मार्केट्स का और इमर्जिंग मार्केट्स का वो शायद आ सकता है, क्योंकि last 5-6 years completely belong to the US markets, so that their markets were the outperformers, और emerging markets including India actually have not done much. अगर आप डेटा भी देखेंगे तो लास्ट 8 years में our markets are just up 100% in 8 years, which is not a great return, right? It's just about 7-8% CAGR. So the next 10 years, when you look at it from that angle, if you're looking at a slightly longer term picture, should be good for Indian markets and more subdued for the developed markets. ओके, सो सर, जैसे अभी आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स के लिए आगे के 10 साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो एनी सेक्टर्स जिस पे आप बेट कर रहे हैं या एनी सेक्युलर ट्रेंड्स जिस पे आपका ध्यान है? हाँ, जब हम 10 साल की बात करते हैं तो there are 2 or 3 sectors which are evergreen sectors, जो बाकी मार्केट में भी अगर आप यूएस का हिस्ट्री देखेंगे या चाइना का हिस्ट्री देखेंगे तो there are certain sectors which always do well across countries, and the same story will happen in India also, और वो चल भी रहा है. So these 3 sectors, 3 or 4 sectors are primarily consumers. There are financials, right, and there is healthcare, and there is technology. So these are the 4 buckets for any long-term investor. इन buckets में आप pick and choose कर सकते हैं stocks. फाइनेंशियल्स में भी अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है, इंडिया का क्रेडिट पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली कंज्यूमरिज्म, स्पेशली जो बोलते हैं कि जब पर कैपिटा इनकम $2000 से नेक्स्ट लेवल पे जाता है, सो लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी बाइंग हैपन्स, जैसे लोग नए घर लेंगे, नए फ्रिज लेंगे, एसीज लेंगे, तो वो एक ट्रेंड चल रहा है, वो एक मैसिव टेलविंड है ऑन द कंज्यूमर साइड। सिमिलरली ऑन द फार्मा साइड, companies, a lot of MNCs are there which are serving the Indian markets, and they have good pricing power, they have good ROEs, so that is one trend. And of course technology, any big bull run is made up of some sort of a technology breakthrough. So I think इन 4 सेक्टर्स पे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए, और इसमें से फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्हीं 4 में से पिकअप करना ठीक रहेगा। सर, जैसे अभी आपने हेल्थ केयर की बात की, सो आर यू मोर फोकस्ड ऑन हॉस्पिटल्स? सर, जैसे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि एवरीवन इज इनटू डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जो पेनिट्रेशन हो रहा है दैट इज वन, बट सर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा केओस होने लगा है। सो व्हेन यू से हेल्थ केयर, आर यू मोर फोकस्ड ऑन हॉस्पिटल्स, या जैसे फार्मा भी अंडर हेल्थ केयर में आ जाएगा, या फिर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री? हाँ, देखिए, मतलब मे बी आई शुड हैव सेड दिस इन द बिगिनिंग, बट डिस्क्लेमर अभी बोल देता हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कुछ मैंने अगर बात किया भी तो इट्स ओनली फॉर आवर डिस्कशन, बिकॉज आई मैनेज क्लाइंट मनी, तो हमारे पोजीशंस भी हो सकते हैं और हम पोजीशंस कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो
please take everything with a pinch of salt and do your due diligence, right? So pharma में देखिए 3-4 टाइप के categories होते हैं, right? So one main big category in India is जो generics बोलते हैं, जो US को export करते हैं या यूरोप को export करते हैं यहाँ पे बना के at a lower cost, right? So that segment is not doing well since the last few years. अभी थोड़ा पिकअप दिख रहा है, but let's keep that aside. Then you spoke about hospitals and diagnostics and all that. Diagnostics is a good business, but there is no pricing power in that business. Diagnostics में price wars चल रहे हैं, and pricing is really high, and the bigger trend in diagnostics is going to be that the prices are going to keep coming down. तो जैसे जैसे इनका स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे इनके मार्जिन्स भी कम होते जाएंगे. सो नेट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मेजर फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स. सिमिलरली हॉस्पिटल्स जो होते हैं बहुत कैपेक्स इंटेंसिव होते हैं. सो आपने एक हॉस्पिटल बना दिया, आपके एक्स नंबर ऑफ बेड्स हैं, तो उसमें से आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो? देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू कैन टेक आउट फ्रॉम वन हॉस्पिटल. सो इट इज नॉट वेरी स्केलेबल. So my focus is on the fourth category, which is there are a lot of these MNCs which are listed, which make OTC drugs, right? So you have the likes of Abbott and all of these companies which enjoy immense pricing power, which enjoy immense brand power, good management. So I think I would play this sector mostly through the MNCs which operate and sell in the Indian market. That is where I see the large opportunity. And so, जैसे CDMO या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन दिस सेक्टर, इसके लिए आप बुलिश हैं? बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि इंडिया को एज अ हब देखा जा रहा है फॉर CDMO एंड CMO. पिछले आई गेस 5-6 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, so especially in pharma. So any views on that? Yeah, I think CDMO, CROs and all, they come one level below the top pharma value chain. I think that is a story which is very similar to the IT boom of 2000, because there's a lot of talent available. There's a lot of scientific talent available in India, and if the companies execute well and win the trust of these global companies which have the patents, then it can be a big opportunity. So yeah, I think companies like Syngene are doing very good work there, but they are all very sensitive to certain commercializations of certain molecules, taking a certain client live kind of a thing. So you need a lot of patience, and any one bad incident can really derate a stock, right? So we've seen some instances where if something wrong happens at one of the sites, then a lot of trust can be lost. So trust is very important here. So there are companies which are doing very good work in this area. So Divi's is one, Syngene is one amongst the large ones. PI is into the agrichem space, but they're getting into pharma now. So it's a good space. I think it should do well over the next several years. सर जैसे आपने Divi's की बात की, so Divi's के अगर अभी हम रिजल्ट्स देखेंगे, so they have not performed better ड्यू टू जो उनका कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है उसमें थोड़ी डीग्रोथ हुई है. सो अगर मैं स्पेसिफिक Divi's की बात करूं, तो आगे जाके आपको मतलब लाइक मैनेजमेंट इटसेल्फ हैज सेड कि फ्यू क्वार्टर्स विल बी फ्लैट, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं, सो हाउ डू यू सी Divi's एज अ स्टॉक? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट योर व्यूज ऑन दैट. Yeah, see, sometimes क्या होता है ना, we have to look at two things. One is the quarter-on-quarter growth, right? And one is the management's track record, capability to execute and to scale up, right? So Divi's has demonstrated. So Divi's is not a one-cycle company. So I generally divide companies between a multi-cycle company and a one-cycle company. So one-cycle company is a company which just does well when it has tailwinds for a few years and then completely peters off. Now Divi's has survived for many years, and they have scaled up their business in a very large way. So this is a management which will find newer opportunities, and it has relationships in place. So while the current quarter results look bad, that is bad because the last several quarters were very good. So it is more of a short-term cyclical headwind that they had a particular molecule which they were manufacturing. Now that molecule manufacturing is done, so the margins have sort of come down. So companies like Divi's are not a quarter se quarter tak kind of companies. So you have to take a step back and believe in the management. If you believe in that larger opportunity of CDMO
and CRO and all of that, then I think one is better off backing somebody like Divi's, because you can put serious money there, because the management and the corporate governance is very well defined.